welcome back to our channel. तो आमे रिसर्च एप्टीट्यूड तो 20टा क्वेश्चन MCQ डिस्कशन करिथिले आउ आज 30टा क्वेश्चन डिस्कशन करदेबा जोटा कि हमरा एग्जाम पई बहुत ही उपयोगी प्रीवियस ईयर गुडी करे आसीची मध्य तो स्टार्ट करिबा। तो हमर क्वेश्चन टा होची जे एक्शन रिसर्च इज तो एक्शन रिसर्च टा कोन देछि। एक्शन रिसर्च हला गोटे अप्लाइड रिसर्च ना बी नंबर ऑप्शन दला रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, सी नंबर ऑप्शन दला लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ना एक सिमुलेटिव रिसर्च। तो ये चारिटा भितर एक्शन रिसर्च टा कोन बोली कहिछि। तो एक्शन रिसर्च रो काम कोन, एक्शन माने इमीडिएट काम होथबो, इमीडिएट से गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करथबो, इमीडिएट गोटे प्रॉब्लम जदि अराइज हला इमीडिएट एक्शन। तो ऑप्शन टा को कोन हमर ठीक हे जिवो, ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट, दैट सेटा हला ए रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। जेतेबेले भी तुम देखिबो इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करिवा कथा कहिछि सेथिरे आसी जिवो हमर एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट देखिबा द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज। एमानंक मध्यरु कोटा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पाई आवश्यक नुहे बोली पचारिछि। ऑब्जर्वेशन ना मैनिपुलेशन ना कंट्रोलिंग ना कंटेंट एनालिसिस। हमको एक्सपेरिमेंट करिवार अछि, जेहेतु हमको एक्सपेरिमेंट करिवार अछि तो सेठी हमें कोन करि परिबा, मैनिपुलेशन करि परिबा, ताको कंट्रोल करि परिबा, एनालिसिस मध्ये करि परिबा। बट ऑब्जर्वेशन जो अछि एटा दरकार नै एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पाई। किछि हम यदि क्वालिटेटिव रिसर्च करूछु सेइथे पाई ऑब्जर्वेशन टा आवश्यक। बट एटा को आंसर टा भूल देछि, बट हमर ऑप्शन ए टा हि जिवो करेक्ट, जोटा हि जिवो ऑब्जर्वेशन, जोटा नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट मैनिपुलेशन इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ। मैनिपुलेशन कोन, तो मैनिपुलेशन हला सेही जिंस माने जदि हमें डाटा टाको पर्पसफुली किछि चेंज करि देले, डाटा जो आनी पारे किछि चेंज करले, सपोज हमें देखिले कि तीनटा स्टूडेंट मानक मध्यरे साइंटिफिक एटीट्यूड देखा जायछि बट हमें हमर डाटा रे लिखि देले 5। तो ए जो मैनिपुलेशन टा जो चेंज करि दउछु डाटाटा एथरे कोउथरे संभव होछि, ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रे एटा संभव। बट आमर जो केतेक रिसर्च रही लाइक हिस्टोरिकल रिसर्च रही, केतेक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रही, सेथिरे मैनिपुलेशन संभव नुहे। तो बेले बेले क्वेश्चन आसे एमिति where in historical research which is not possible, तो मैनिपुलेशन इज नॉट पॉसिबल। तो सेटा तो ऑलरेडी घटी सारिछि, सेठु हमें डाटा कलेक्ट करूछु, सेथिरे किछि हमें चेंज करि परिबा कि परिबानी। तो हमर ऑप्शन डी हिजबो करेक्ट। तो नेक्स्ट हमर क्वेश्चन हला आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स व्हिच आर इंटररिलेटेड इन रिसर्च। तो कौन कौन इंटररिलेटेड बोली सी कहिछि। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स, deducing the consequences of theories, method employed to obtain them। तो एठी हमरो कोटा करेक्ट हिजिवो, 2 नंबर टा हमरो करेक्ट हिजिवो, जोटा हला प्रथमे आसला हमरो ऑब्जर्वेशन, देन हमें आनिबा हमरो डेवलपिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वेशन रो कॉन्सेप्ट डेवलप करले, देन हम हाइपोथेसिस मेकिंग करले, देन जहां भी डिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थ्योरीज, नेक्स्ट हला मेथड employed to obtain them। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा which of the following provides more latitude to the researcher for creative expression। तो एमानंक मध्यरो कोटा रिसर्चर रो क्रिएटिव एक्सप्रेशन को डेवलप करिया पे सहायता करे देछि। थेसिस राइटिंग ना राइटिंग ऑफ ए रिसर्च आर्टिकल ना प्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्फ्रेंस पेपर ना प्रिपेयरिंग ए रिसर्च सिनॉप्सिस। तो क्वेश्चन पचारिछि which of the following
provides more latitude to the researcher for creative expression. तो एक्सप्रेशन वर्ड जदि कोठु आसीबो जेतेबेले आमे गोटे कॉन्फ्रेंस पेपर को प्रेजेंट करिबा क्रिएटिव एक्सप्रेशन तो ऑप्शन 3 इज हमर करेक्ट जोटा ला प्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्फ्रेंस पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च रो माने कोन से पचारिछि। फर्स्ट ऑप्शन हमर हला द रिसर्च that is carried out after the incident. The research is carried out prior to the incident. The research is carried out along with the happening of incident, or the research is carried out keeping in mind the possibilities of an incident. Post माने कौन after तो ex post facto research माने कौन रिसर्च टा सब बेले इंसिडेंट हला परे हबो। तो ये हमारा ऑप्शन कोडा करेक्ट है ऑप्शन ए दैट इज द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। पोस्ट देछि ना एक्स पोस्ट फैक्टो हला द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा वर्कशॉप्स आर मींट टू बी। तो वर्कशॉप्स ता कोन पई दरकार हमरा देखिबो वर्कशॉप्स माने करा जाय जो बहुत सारा स्कूल मानकर भी अरेंज करा जाय आमे डिफरेंट क्राफ्टिंग पाई मध्य कोन करा जाय वर्कशॉप अरेंज करा जाय। तो से दला ऑप्शन ए दला गिविंग लेक्चर ना मल्टीपल टारगेट्स ग्रुप ना शोकेस न्यू थ्योरीज ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। तो वर्कशॉप रे कोन करा जाय आमे जदि सपोज कैंडल मेकिंग वर्कशॉप जाउछु सेतरे हमकु एक्सपीरियंस प्रदान करा जिवो आमे केमिति कैंडल तयारी करि परिबा हमकु माने सब मटेरियल प्रोवाइड करिवे सो दैट आमे एक्सपीरियंस बा ट्रेनिंग दिया जिवो। तो हमरो को ऑप्शन टा करेक्ट है जिवो ऑप्शन डी जोटा ला हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस डी है जिवो करेक्ट। नेक्स्ट देखिबा A doctor studies the relative effectiveness of two drugs of dengue fever. His research would be classified as तो डॉक्टर हमर कोन करूचंती ना दुईटा मेडिसिन डेंगू फीवर रिलेटेड सेटा को रिसर्च करूचंती कहार इफेक्टिवनेस ता अधिक बोली। तो एही रिसर्च ता कोन हबो एथरे कोन करूचंती दुईटा मेडिसिन नै करे डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करूचंती जे कहार इफेक्टिवनेस ता अधिका हबो। तो को ऑप्शन ता ठीक है जिवो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जेहेतु डॉक्टर इथे एक्सपेरिमेंट करूचंती को मेडिसिन रा इफेक्टिवनेस ता डेंगू फीवर पई अधिक तो सेटा कोन है जिवो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इथनोग्राफी तो हमर कल्चरल सेटअप रे हबो केस स्टडी हला इन डेप्थ गोटे पर्सन विषय रे हमको स्टडी करबार अछि किंबा टॉपिक विषय रे। तो ऑप्शन बी है जिवो हमर करेक्ट। नेक्स्ट देखिबा 9-year-olds are taller than 7-year-olds। तो एमाननको मध्यरो कोटा करेक्ट है जिवो से कहला 9-year-olds जो माने अछंती से माने सब बेले 7-year-old थारो डेंगा बोली कहिछि। तो एटा को टाइप रो स्टडी रो जाना पड़िबो बोली से पचारुछि वर्टिकल स्टडी ना क्रॉस सेक्शनल ना टाइम सीरीज स्टडी ना एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो आमे जति गोटे पॉइंट रे देखिले कि गोटे 7-year चाइल्ड टा छोट अछि आ गोटे 9-year माने ओल्ड रो चाइल्ड रो हाइट टा टिके बड़ अछि। तो आमे सेठी देखिले कोन माने कैलकुलेट कले जे 9-year-olds आर टॉलर देन 7-years-old। तो एटा गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे आमे ऑब्जर्व करिकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रे हमर कंक्लूजन टा दोछु। तो सेटा कोन है जिवो क्रॉस सेक्शनल स्टडी जोटा कि हला क्रॉस सेक्शनल स्टडी हला a type of research study in which a group of people is observed or certain information is collected at a single point of time or over a short period of time। गोटे सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम तमे देखिलो दुईटा पुओ अछंती जणेकर ईयर हला 7 years आ जणेकर 9 years तमे देखिलो 9 years रो हाइट टिके अधिक अछि। तो तमे कोन ड्रा कलो जे 9 year टा
टलर थाए सब 7 year old ठारू सेटा है गला हमरो क्रॉस सेक्शनल स्टडी जोटा आंसर बी हेजबो हमरो करेक्ट। नेक्स्ट असला a researcher attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness children. Which method of research would be appropriate for this? The researcher कौन करुचंती he attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness children. तो anxiety proneness children उपरे से गोटे माने रिसर्च करुचंती तो को मेथड टा एप्रोप्रिएट हबो बोली कहिछि। तो एटा कोन होची से माने ऑलरेडी एंजाइटी प्रोनेस स्टूडेंट मानको ऊपर माने से मानको कोन करा जाउची रिसर्च करा जाउची देन से मानको स्टडी करा जाउची तो एटा हिजबो हमरा एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड जो थरे कि गोटे फेनोमेनन हल्ला परे ता ऊपर स्टडी करा जाउची सेटा हिजबो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा The principal of a school conduct an interview session of teachers and students with a view to explore the possibilities of their enhanced participation in school program. This endeavor may be related to which type of research? तो स्कूल रिलेटेड जहाँ भी एक्शन हला माने जहाँ भी प्रिंसिपल किछि एक्सपेरिमेंट करूचंती किछि कंडक्ट करूचंती इंटरव्यू स्कूल माने टीचर और स्टूडेंट मानक पई तो सेटा कोन होइछबो हमरो सेटा होइछबो हमरो एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट देखिबा हमें द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न्ड विथ व्हिच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटी हमर जो द रिसर्च एथिक्स रो प्रॉब्लम रहिछि को रिसर्च एक्टिविटी संगरे संपृक्त बोली से पचारिछि। फर्स्ट हला फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ ए थीसिस नेक्स्ट हला डाटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक नेक्स्ट हला डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च फोर्थ हला एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग तो हमर आंसर टे हिजबो एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। नेक्स्ट 32 आंसर 33 क्वेश्चन टा देखिबा which of the sets of activities best indicate the cyclic nature of action research strategy आमे जानिचु हमर एक्शन रिसर्च चारोटी स्टेज रही थाए साइक्लिक स्टेज फर्स्ट कोन प्लान देन हमर हला एक्ट देन हमर हला ऑब्जर्व देन हमर हला रिफ्लेक्ट तो एटा कोठी अछि प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट PAOR तो ऑप्शन 4 हिजबो हमर करेक्ट आंसर जोटा प्लान एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट देखिबा ए वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज नोन एज एमिते गोटे वेरिएबल जहा को कि हमें मैनिपुलेट करि परिबा ताहा को कोन बोली कुआ जिवो बोली से पचारिछि तो मैनिपुलेट हमें को वेरिएबल को करि परिबा जे हमर डिपेंडेंट वेरिएबल थिबो ताको हमें मैनिपुलेट करि परिबा सॉरी तो हमर आंसर टे जिवो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो जो वेरिएबल जहा को हमें मैनिपुलेट कर परिबा सेटा हेगला इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमें द रिसर्चर कैन मैनिपुलेट्स एंड कंट्रोल्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट डिपेंडेंट वेरिएबल को से कंट्रोल किबा मैनिपुलेट करि परिबो नाही। नेक्स्ट हला Type 1 error in the testing of a null hypothesis occurs when the researcher तो यार ऑप्शन तो देखा जाउची टाइप 1 एरर केते बेले हुए जेते बेले रिसर्चर टा रिजेक्ट करे जेते बेले से हाइपोथेसिस टा ट्रू थाए तो टाइप 1 error occur when the researcher rejects the null hypothesis when it is true और टाइप 2 एरर केते बेले हबो accept the null hypothesis when it is false। Next हमें देखिबा 36 number question which of the following is not a non probability sampling techniques एमाननको मध्यरु कोटा non probability
not a non-probability sampling techniques. तो कोड probability sampling techniques टे कहिछि तो not a non-probability माने कोन probability sampling techniques तो एमानक मध्यरु snowball हला गोटे non-probability देन हमर incidental जोटा रहिछि सेटा भी हेगला हमर non-probability sampling देन हमर purposive एटा भी हेगला non-probability sampling techniques तो कोटा एमानक मध्यरु probability stratified random sampling जोटा ऑप्शन बी हे जिवो सेटा हे जिवो करेक्ट ऑप्शन टा भूल दे दीची देखिबा हमें यार ऑप्शन टा बोधे सेठी दे दीची नेक्स्ट हमें देखिबा a researcher is interested in studying the flawed victims which one of the following is a suitable selection method तो से फ्लॉड विक्टिम्स माने जो बनिया रे जो माने प्रभावित होइचंती सेई मानको सेमानंको पई गोटे रिसर्च करिया पई चाहुचंती को सैंपल सिलेक्शन मेथड टा ठीक रहबो कहिछे रैंडम तो हबनी माने नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हबनी से जानी कि पर्पसिव सैंपलिंग हबो हमर जोटा आंसर हेगला डी पर्पसिव माने पर्पसफुली से बनिया पीड़ित लोक माननको ऊपर रिसर्च करिया पई चाहुचंती तो कोटा हे जिवो ठीक पर्पसिव नेक्स्ट हला 38 डिडक्टिव रीजनिंग हेल्प्स इन तो हमर डिडक्टिव रीजनिंग टा कोथि पई हेल्प करथाय से हमर हाइपोथेसिस जनरेशन रे हेल्प करथाय डिडक्ट करके हमें हाइपोथेसिस जनरेशन करि परिबा नेक्स्ट हला व्हिच सैंपलिंग टेक्निक विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट टू ड्रॉ ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन जदि पॉपुलेशन टा हमर हेटेरोजीनियस अछि तो से पचारिछि हमर को सैंपलिंग टेक्निक्स रे से माने आमे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सिलेक्ट करि परिबा तो कोथरे आमे जदि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स नबा को प्रोबेबिलिटी नबा स्ट्रैटिफाइड रैंडम टेक्निक्स रैंडमली आमे जदि हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन रो कलेक्ट करिबा तो कोन हबो दैट विल the sampling techniques will be stratified random techniques next question देखिबा हमें chi-square test is an example of तो chi-square test टा कहार एग्जांपल बोली कहिछि पैरामेट्रिक टेस्ट ना नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ना डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ना सर्वे टेस्ट तो हमरो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कोन कोन आसी जाय थाए हमरो टी टेस्ट पळे आसे जेड टेस्ट पळे आसे पेयर टी टेस्ट ए सब टी जेड पळे आसे पेयर पैरामेट्रिक टेस्ट रे नॉन पैरामेट्रिक रे कोन आसे हमरो chi square टेस्ट देन हमरो आसे मेन व्हाइटनी टेस्ट साइन टेस्ट तो कोटा हे जिवो हमरो आंसर हे जिवो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट chi square टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नेक्स्ट देखिबा a researcher intends to explore the effect of possible factors for the organization of effective midday meal interventions which research method will be most appropriate for this study तो से कहला जे से रिसर्चर टा कोन चाहुचंती मिड डे मील रो इफेक्ट टा कोन जानिबा पई चाहुचंती तो इफेक्ट जानिबा पई चाहुचंती तो इंसिडेंट टा हला परे ई जिनिसटा स्टडी करा जाउची तो जदि इंसिडेंट घटिला परे गोटे रिसर्च टे कैरी कहा जाउची तो आंसर कोन हे जिवो हमर को रिसर्च एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जेहेतु इंसिडेंट हला परे से रिसर्च टा कंडक्ट करा जाउची नेक्स्ट हमर आसला इन एन इथनोग्राफिकल स्टडी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट एप्रोप्रिएट तो इथनोग्राफिकल स्टडी रे को टेक्निक टा मोस्ट एप्रोप्रिएट बोली से पचारिछि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ना क्वेश्चनर ना ऑब्जर्वेशन ना सोशियोमेट्री तो इथनोग्राफी रे आमे कोन करिथाउ ना गोटे जगह को जाई कि तांकर कल्चरल जहा भी स्टडी से विषय रे आमे पढ़ी थाउ माने जानी थाउ
तांकर एनवायरनमेंट तांकर ग्रुप रो कम्युनिटी तांकर कोन सब रेकॉर्ड अछि से विषय आमे ऑब्जर्व करथां तो कोटा हिजबो हमरा करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 जोटा हिजबो ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट देखिबा द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज एटा मे बी रिपीट हिजि बोधे द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैनिपुलेशन तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रे आवश्यक कंट्रोल भी करा जिवो रेफरेंस कलेक्शन भी हबो कोटा रही गला ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वेशन इज नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा when a research problem is related to heterogeneous population the most suitable sampling method is ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା heterogeneous population ଉପରେ ଆସିଥାଏ କୋଉ ମେଥଡରେ କୋଉ ସାମ୍ପଲିଂ ମେଥଡରେ ଆମେ ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ କରିପାରିବା ପଚାରିଛି ସେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ କୋଉ ମେଥଡରେ stratified random sampling method ସାହାଯ୍ୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା the process not needed in experimental research एटा observation ही हबो रिपीट हो जाइछि। देन देखिबा हमें controlled group condition is applied in एमानंक मध्यरे कोउथरे controlled group condition applied हबो आमे मैनिपुलेशन करि परिबा कंट्रोल करि परिबा को एक्सपेरिमेंट रे को रिसर्च रे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रे मैनिपुलेशन कंट्रोल ए सब जिनस आमे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रे करि परिबा। नेक्स्ट आसिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसर्च टूल जो हमर डाटा कलेक्शन करिया पई जो टूल गुडी को यूज करा जाए इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन एमानक मध्यरु कोटा उटे रिसर्च टूल से पचारिछि ग्राफ ना इलस्ट्रेशन ना क्वेश्चनएयर ना डायग्राम कोन हे जेबो क्वेश्चनएयर हे जेबो हमर उटे रिसर्च टूल। नेक्स्ट ला एक्शन रिसर्च मीन्स एक्शन रिसर्च कौन ए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एन अप्लाइड रिसर्च ना रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम और रिसर्च विथ द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कोडा एक्शन रिसर्च आमे जानी जे इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई यूज करा जाए तो रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिबा रिसर्च इज व्हाट इज रिसर्च से पचारिछि ए नंबर हला सर्चिंग अगेन एंड अगेन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर द ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम नॉन ऑफ द अबव सब टिके ना किछि ठीक अछि फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम हे पारे ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम हे पारे देन वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर द ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम एटा जो अछि साइंटिफिक वे रे हमें गोटे ट्रूथ गोटे प्रॉब्लम रो ट्रूथ को सर्च करबा सेटा हिजबा हमरो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मैनिपुलेशन इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन काहर पार्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पार्ट कंट्रोल हे गला मैनिपुलेशन हे गला ए सब जिनस हमरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रो पार्ट तो एठी हमरा 50 टा एमसीक्यू रिसर्च एप्टीट्यूड रो सरी जाइछि। नेक्स्ट क्लास रे हमें आउ केतेक एमसीक्यू अन्य किछि चैप्टर रो डिस्कशन करिबा।